So today we will start a new topic, boundary value problems for heat and wave equation. You have earlier studied these equations uh, on full real line or on half line using method of reflection. But here we take a finite boundary. You can take A to B. So we will solve these problems on finite interval, and for simplicity I will take A equals to 0, B equals to L. So method is introduced earlier in linear PD, that is separation of variables. Separation of variables. I'm taking examples. So first kind of boundary condition I will take Dirichlet boundary conditions. And short for boundary condition I will write BC. Okay, so firstly I take wave equation, then we will take heat equation. So you have second order PD wave equation on finite domain 0 to L, and so x equals to 0 and x equal to L, these are two boundary, and we have initial condition. So these are initial conditions. When t equals to 0, this is initial displacement phi of x, and initial velocity is psi of x. And in short, initial conditions I will write IC, and these are boundary conditions. So when x equals to 0, left boundary, and at right, right boundary, this u is 0. So this kind of condition in term of unknown, that you know the value of unknown at two boundary. So these are known as Dirichlet conditions. And on the other hand, other kind of boundary conditions that are known as Newman, they are in term of derivatives. Okay, so Dirichlet conditions means that you know unknown at both endpoint. So this is 0. So we apply separation of variable. So for this we let u, so you can separate the variable. So there are two independent variable, one is x. So you can separate the term containing x. Also you can separate the term containing variable t. Okay, so just put a label. So this is 1, this is 2. Okay, so compute, so we assume the solution in this form. So just compute utt and uxx, then fifth in first equation, so part 1, utt minus c square uxx. So for this you can write utt. I'm skipping that
x and t inside. So that is understood that u is a function of x and t, and capital X is a function of only x, and capital T is only function of t. Okay, so what will be derivative? X is a function of one variable, so you will write d2x by dx, okay? Or in short, you can write x dash t. Similarly, compute utt. So, sorry, this is uxx. Okay. Similarly, tt will be derivative d2t by dt square. Okay, so given PD हमारा क्या था, utt minus c square uxx equals to 0. So just fit utt and uxx is, and now this is linear, so you can separate. So write one side term containing x and another side term containing t. You can keep c either on left hand side or on right hand side, that doesn't make difference. Okay, so left hand side, that is a function of x. Right hand side, that is only function of t, and small x and small t, these are independent variable and both are equal. ठीक है, इसका मीनिंग क्या होगा? So both are constant. Okay, so since left hand side does not depend on t and right hand side does not depend on x, but both are equal. So it can happen only when both are constant. So you can write that constant lambda. So now you have two OD, one in x, so that will be x, and another one in t. And we solve these OD separately. So firstly, we take OD of containing x. So x double dash minus lambda x equals to 0. Also, we can uh, find conditions on x. So since u 0t, अब u क्या था, आपने सपोज किया है x, okay, since u क्या है xt, so fit x equals to 0, small x. So this is left boundary condition, so this is 0. So this implies x0 fixed and tt is variable. So this implies x0 is 0. And another boundary, ult, this will give you xl equals to 0. So in other words, now I have a boundary value problem, यानी कि second order OD है, second order OD, which is boundary value problem. So you have two boundary condition when x equals to 0, small x equals to 0. Okay, so capital X unknown है, तो left boundary और right boundary पे this is 0. कैपिटल X में है ना, तो कैपिटल X की वैल्यू यहाँ भी 0 है और यहाँ भी 0 L पे भी. So solve this OD. So
You can take three cases depending on this parameter lambda. So if I take lambda equals to 0, then I have x double dash equals to 0. Double integration will give you c1x plus c2 d2x by x square. एक बार करोगे तो dx by x इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा, दो बार करोगे तो c1x plus c2. So use boundary condition. You can write x is a function of x. So both the boundary condition that will give you, when you fit x equals to 0, c2 equals to 0. When you fit x equals to L, so this will give you c1 equals to 0. So in this case, we get only trivial solution. Second case, if I take lambda positive, you can take in any order. Then solution is, you can write lambda equal to some alpha square if you want. Okay, positive है तो आप लिख सकते हो ना. You can write for simplicity if you want. So solution will be क्या आएगा? अब जल्दी इक्वेशन लिखोगे तो r स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 0. सो r इक्वल्स टू प्लस माइनस अल्फा. एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होगा e पावर अल्फा x e पावर माइनस अल्फा. सो अगेन x0 इक्वल्स टू 0 और xl इक्वल्स टू 0. x0 इक्वल्स टू 0 फिट करोगे तो क्या आएगा? c3 प्लस c4 इक्वल्स टू 0 बन जाएगा ना फर्स्ट कंडीशन से, है ना. और सेकंड यूज करोगे तो फर्स्ट कंडीशन ये दे देगा ना, c3 प्लस c4 इक्वल्स टू 0. सो दिस इंप्लाइज c4 इक्वल्स टू माइनस ऑफ c3. सेकंड x इक्वल टू l फिट करोगे e पावर c3 कॉमन ले सकते हो, अल्फा l. ठीक है, और अल्फा l. एक्सपोनेंशियल तो वैनिश होगा नहीं, यहाँ से c3 जीरो आ जाएगा और c4 भी जीरो आ जाएगा. यहाँ क्या फिट किया मैंने? c4 को माइनस c3, तो c3 दोनों से कॉमन आ जाएगा. सो अगेन वी गेट ट्रिवियल सॉल्यूशन. और होमोजीनियस में ऐसा होगा ही, ट्रिवियल सॉल्यूशन तो है ही. होमोजीनियस प्रॉब्लम है ना, 0 will always satisfy. Now third case, you can take these cases in any order. ठीक है, कोई स्पेसिफिक नहीं है. You can take lambda equals to positive first, 0 मिडिल में ले सकते हैं in any case. So case 3 is if lambda is negative, then you can write lambda equal to some minus beta square, and solution is, तो जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगा that will be r square plus beta square बन जाएगा. नहीं, इसमें फिट करोगे cos अल्फा cos बीटा इसमें थर्ड में. सो साइन और कॉस में मिलेगा सॉल्यूशन, एंड यू कैन राइट c5 cos beta x plus c6 sin beta x. आल्सो यू कैन राइट, आप साइन को पहले भी लिख सकते हो, दैट डजंट मैटर. ठीक है,
up C5 sin beta x plus C6 cos beta x, you can also write. Now use boundary condition. So x0 equals to 0. This will give you C5 equals to 0. Cos 0 1 होता है, sin 0 is always 0. Second boundary, this will give you C6 sin beta L. So if sin beta is 0, and you can take C6 non-zero, और अगर C6 0 है तो C5 भी 0 है, so again you get trivial solution. तो अगर C6 आपका नॉन जीरो है बट स्टिल साइन बीटा कैन वैनिश, कौन सी वैल्यू आएगी यहाँ से? बीटा L is equal to n pi. बीटा एल इक्वल टू एन ऑफ पाई. तो बीटा क्या आ जाएगा यहाँ से? एन पाई बाई एल. सो सोल्यूशन इज C6 साइन बीटा बीटा एक्स, और बीटा इज एन पाई बाई एल. उससे साइन वैनिश कब होता है? जीरो भी आएगा ना यहाँ पे. जीरो वाला केस तो हम पहले कर चुके हैं ना. प्लस माइनस भी आएगा, माइनस वाले क्योंकि आप आगे स्केल करोगे तो उसमें एडजस्ट हो जाएगा ये. तो इनको हम आइगन वैल्यू प्रॉब्लम भी बोलते हैं ना, आपने पढ़ा होगा. सो वी कैन राइट, तो लैम्डा का वैल्यू है तो लैम्डा एन, so that is beta, so n pi by L square. These are also known as eigenvalues. और जो solution है तो n पे डिपेंड कर रहा है, so I put a label n. जो solution आएगा C6 sin n pi x by L. तो इस sin n pi x by L इसको हम बोलते हैं आइगन वेक्टर, that we have studied in second order boundary value problems. Okay, so non-zero solution is called eigenvector, and जो पैरामीटर के corresponding non-zero solution मिल रहा है उस पैरामीटर को हम बोलते हैं eigenvalue. So you find the solution. So solution of first OD. अभी सेकंड सॉल्व करना बाकी है अभी आपका, P वाला ना. So now we solve OD in T. So that was जो सेकंड OD था, T डबल माइनस लैम्डा C स्क्वायर T, और you can write lambda C square T equals. तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? बाकी केस लिखने की जरूरत नहीं है. सो फॉर लैम्डा इक्वल टू माइनस बीटा स्क्वायर, सोल्यूशन इज you can write one side if you want. ये बनेगा. तो इसका भी ऑक्सिलरी इक्वेशन सेम बनेगा, आर स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर सी स्क्वायर. कौन सी फॉर्म में आएगा सोल्यूशन? साइन कॉस में आएगा. ए कॉस बीटा सी टी प्लस बी साइन बीटा सी टी.
And if you fit value of beta, so you can put a label n, an cos beta ct plus bn sin बीटा की वैल्यू फिट कर दो n पाई and here as well n pi c t by l. So therefore solution of original PD, that was uxt equals to x times t, and in term of these functions you can write, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो x और t को, तो मल्टीप्लाई करोगे तो जो पीछे C6 था ना, चलो उसको Cn कर देते हैं, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हो, C लिख सकते हो, तो यहाँ पे आ जाएगा Cn sin n पाई x पाई l, x का वैल्यू देन t का वैल्यू, an cos n पाई ct by l प्लस bn sin n पाई ct by l। ओके, अब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो cn मल्टीप्लाई बाई an देन cn मल्टीप्लाई बाई bn, इनको आप नया कांस्टेंट लिख सकते हो, ठीक है। फर्स्ट हम क्या आ गया, cn मल्टीप्लाई बाई an, इसको मैं लिख रहा हूँ ए बी सी तो यूज कर लिया हमने, सो डी लिख सकते हैं, dn अंदर ले गए इसको cos n पाई सी टी बाई एल प्लस dn en sin n पाई सी टी बाई एल, ठीक है। अच्छा ये साथ में रहेगा sin n पाई x बाई एल, ठीक है। सो व्हाट आई हैव रिटन cn an equals to dn and cn bn equals to en. So still we have two constant, and when t equals to 0 you have two initial conditions. So by using those initial conditions you can compute dn and cn, ठीक है। तो अब लीनियर पीडी में आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाते हो, सो बाय यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल the general solution is, so what is general solution for linear equations? Their linear combination, okay, their linear combination is a general solution. So this is n1 to infinity dn cos n pi c t by l plus en sin n pi c t by l and sin n pi x by l, okay। अब दो कंडीशन और हैं इनिशियल कंडीशन टी में, सो यूज इनिशियल कंडीशन, फर्स्ट था ना फाई ऑफ एक्स वाला, व्हेन टी इक्वल्स टू 0, तो फाई एक्स क्या आ जाएगा, n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी dn, ये टर्म तो वैनिश हो जाएगा साइन वाला, सो dn
और cos 0 t इक्वल्स टू 0 फिट कर देना इसमें, cos 0 1 होगा तो बचेगा सिर्फ ये sin n pi x by l, दिस वन। और सेकंड कंडीशन, तो ये क्या चीज बन गई वैसे, हमने पढ़ा था ना ओडी में, क्या चीज है ये, साइन में एक्सपेंशन है ये। फाई को आपने साइन साइंस की टर्म में लिखा है तो क्या बोलते हैं उसको, विच इज फूरियर सीरीज, विच इज फूरियर साइन एक्सपेंशन। तो कोफिशिएंट क्या होते हैं, फूरियर कोफिशिएंट की वैल्यू, देयरफॉर dn विल बी 2 by l 0 to l phi x sin n pi x by l, right where, ये पूरी सीरीज है ना, तो कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होती है, हमने इनर प्रोडक्ट की फॉर्म में भी पढ़ा था पहले, फाई का इनर प्रोडक्ट साइन के साथ एंड यू विल डिवाइड साइन का इनर प्रोडक्ट साइन के साथ। रिमेंबर, and second coefficient you can compute, second condition यूज करो, so use ut x0 equals to psi of x, so we get, तो फर्स्ट इसको सॉल्यूशन को टाइम के सेंस में डिफरेंशिएट कर लो, ठीक है, टाइम के सेंस में, टाइम के सेंस में करोगे तो कॉस साइन बन जाएगा, साइन कॉस बन जाएगा, ये तो एक्स वाला एज इट इज रहेगा, है ना, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस साइन एन पाई सी टी बाई एल, और साथ में जब टी का करोगे तो एन पाई सी बाई एल, ठीक है, फिर टी को जीरो फिट करोगे ये टर्म तो वैनिश होगा, सेकंड बचेगा साइन कॉस बन जाएगा, कॉस 0 1 होगा, ई एन के साथ एन पाई सी बाई एल आ जाएगा डेरिवेटिव करने से। सो व्हाट यू गॉट फाइनली, psi x equals to n pi c by l, ठीक है, ये कैसे आया, n pi c t by l का जब डेरिवेटिव किया आपने, cos 1 बन जाएगा और कोफिशिएंट e n और sin n pi x by l that is as it is, which is also Fourier series, Fourier sine series, बट यहाँ पे कोफिशिएंट ये है सारा, सो देयरफॉर तो कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होगी, कोफिशिएंट n पाई c बाई l ई एन पूरा, पहले तो डी एन निकल रहा था ना, अब ये भी है साइन के साथ जो भी है दैट इज कोफिशिएंट,
कोफिशिएंट की वैल्यू क्या आएगी, 2/L पूरे सीरीज, ठीक है। कोफिशिएंट साथ में साइन n पाई x/L। तो यहाँ से आप, सॉरी उल्टा लिख दिया यहाँ, तो साई x आएगा ना, कोफिशिएंट की वैल्यू साई ऑफ x। तो चाहो तो यहाँ से आप en निकाल लो, ठीक है। अब en क्या होगा, L will cancel out, so 2/n pi c 0 to L psi x sin n pi x/L। So this completes this article. So finally conclusion क्या है, so this is the solution, okay, so this is the solution where dn is this, तो dn यूज हो रहा है यहाँ पे, dn का वैल्यू ये है और en का वैल्यू ये है। Okay, so solution of Dirichlet problem for wave equation consists sine and cosines. So this is just similar to Fourier series expansion. Any doubt? So in this similar fashion, you can write solution of heat equation. I think we have written earlier in chapter linear PD, but you can write it quickly. So what do you take? Heat equation on finite domain, ओके। तो एक इनिशियल कंडीशन है यहाँ पे, एक क्यों है, क्योंकि टाइम के सेंस में डेरिवेटिव फर्स्ट है, सो यू नीड ओनली वन कंडीशन। जैसे वेव में तो दो था ना, दो कंडीशन थी, तो दो अननोन भी आ रहे हैं, डी और ई। सो टू फाइंड टू अननोन यू नीड टू इक्वेशंस, बट हियर यू विल गेट ओनली वन कंडीशन। तो इनिशियल कंडीशन जो है दैट इज यू एक्स जीरो, दैट इज फाई ऑफ एक्स, एंड टू बाउंड्री कंडीशन इन एक्स, u 0t, ult, they are zero. So these are Dirichlet conditions. So likewise, before you take apply separation of variable, okay, तो दो ओडी मिलेंगी आपको यहाँ पे, यू टी equals to k u x x। So you can write x double dash by x equals to 1 by k t dash by t. Take this side equals to constant lambda. So you got 2 OD. First one is x double dash minus lambda x equals to 0.
and second one is t dash minus k lambda t equals to 0, and take three cases again. कर लोगे? Take lambda equals to 0, तो x भी 0 आ जाएगा. You can check. Lambda positive, again trivial solution. Of course you need to use boundary condition, that will be, ये यूज करोगे आप. कर लोगे चेक. सेम 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 मैनर में करना है. सेम इक्वेशन जैसे पहले किया था आपने, जस्ट रिपीट करना है ना. ओडी तो सेम ही है ना, पिछले वाला ही है. सेम ओडी, सेम कंडीशंस. तो थर्ड केस जो लिखोगे आप, लैम्डा नेगेटिव लिखोगे तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा इस फॉर्म में. अच्छा बीटा लिखना, तो सॉरी, कांस्टेंट को आप फिट कर लेना अकॉर्डिंग C1 C2 जो भी लिखना हो अपने. C1 cos बीटा x प्लस C2 sin बीटा x. So x0 equals to 0. This implies C1 equals to 0. XL equals to 0. This implies C2 sin beta L equals to 0. So if I take C2 non-zero, so again sin beta L equals to 0. So beta equals to n pi by L. सेम. तो जो सोल्यूशन बनेगा आपका x, ओके. अब सेकंड t वाली, जो t वाला इक्वेशन है, इसमें भी लैम्डा को बीटा स्क्वायर फिट कर दो, माइनस बीटा स्क्वायर. वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं, dt बाई टी. ठीक है. लॉग लेके सोल्यूशन आएगा t इक्वल्स टू सम कांस्टेंट e पावर बीटा स्क्वायर के t. और एक पॉइंट यहाँ इंपॉर्टेंट है, बीटा एन पाई बाई एल है, तो लैम्डा होगा माइनस बीटा स्क्वायर, सो माइनस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई एल स्क्वायर. सो यू कैन फिट एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई एल स्क्वायर के टी. ठीक है. फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और सुपर पोजिशन प्रिंसिपल लगा दो. ठीक है. ऐसे किया वाले भी.
दो solution हो गए ना, x और t, multiply, and so finally what is uxt? That is summation n equal to 1 to infinity cn sin n pi x by l e raised to power minus n square pi square by l square kt. अब इनिशियल कंडीशन यूज करो. When t equals to 0, solution is phi of x. ऊपर से क्या बन जाएगा, n 1 to infinity cn sin n pi x by l e पावर 0 1 हो जाएगा, t को 0 फिट करोगे, विच इज अगेन फूरियर साइन सीरीज. तो cn का वैल्यू क्या आएगा, 2 by l 0 to l phi x sin n pi x by l. Okay, so this is the solution and this is the cn. So in that way you can write solution of boundary value problem for wave and heat in term of Dirichlet condition. Anything you want to ask? So some boundary conditions are given in terms of derivative. They are Newman that we will study tomorrow. Okay, sir. ये फर्स्ट केस था डिरिचले का. So next we will study Newman in term of derivative, and then we also study mixed boundary condition. Okay, sir. And then we will move to non-homogeneous equation. Okay, sir. Okay. सर एक क्विज के बारे में पूछना था, आज है सर सेकंड ऑर्डर पीडी का. हैं? सर आज क्विज है ना? Okay, study well. Any doubt? Okay, so I'll stop. We will continue tomorrow.